अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू बी फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 11 फिज़िक्स जो नई किताब है 2026 की, उसके चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं। और हम वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो स्मार्ट सिलेबस में मौजूद हैं। जो स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन कट कर दिए गए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए positively charged particle is projected perpendicularly, यानी थीटा यहाँ पर कितना है 90 डिग्री टू ए मैग्नेटिक फील्ड at a speed of 1500 meter per second and experiences a force of magnitude F. At what angle theta with the field the particle should be projected at speed of 2000 meters per second so that it experience the same magnitude of force. तो ये लॉरेंट्स फोर्स का क्वेश्चन है। F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी विच इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो दो केसेस हैं, एक केस में थीटा 90 डिग्री है और स्पीड उसकी 1500 मीटर पर सेकेंड है, और दूसरा केस है जिसमें जो थीटा हमने फाइंड करना है और उसमें स्पीड 2000, फिर स्पीड डिफरेंट हो गई है लेकिन चार्ज भी हुई है और फील्ड भी हुई है। तो हमें थीटा निकालना है, इस तरह का हमें थीटा सेट करना है कि दोनों फोर्सेस आपस में दोनों केसेस में बराबर हो। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा में जो v1 है स्पीड इन फर्स्ट केस, वो किसके बराबर है, दैट वाज 1500 मीटर्स पर सेकेंड। ये इसकी स्पीड है इन फर्स्ट केस, जबकि जो थीटा 1 है, थीटा 1 इज इक्वल टू 9 परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया गया, तो थीटा 1 कितना होगा 90 डिग्रीज। सो वी भी गिवन है, थीटा भी गिवन है, और हमारे पास जो फोर्स सेकंड केस में अगर v2 आपके पास 2000 मीटर पर सेकेंड हो जाए, 2000 मीटर्स पर सेकेंड हो जाए, तो बताएं थीटा कितना हो अगर आपके पास, थीटा हमने फाइंड करना है व्हेन F1 जो है वो किसके बराबर है, F2 के बराबर है, और चार्ज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स द सेम। सो हम लॉरेंट्स फोर्स इस्तेमाल करेंगे। जो हमने यहाँ पर फार्मूला यूज़ करना है, फार्मूला यहाँ पर है, फार्मूला हमने ये यूज़ करना है। फार्मूला टू बी यूज्ड हेयर इज फार्मूला हमारे पास है कि F इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड जो होगी क्या होगी, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। वी क्रॉस बी होता है, इसकी जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्यू वी क्रॉस बी इज इक्वल टू, जिस तरह क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि F1 इज इक्वल टू F2 है। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, हमारे पास बने F1 क्या बनेगी, वो बनेगी Q, सेम है दोनों में, Q V1 B, तो दोनों में सेम है, सेम मैग्नेटिक फील्ड है तो B भी सेम रहेगा, साइन ऑफ थीटा 1 ये Q1 है, और दैट शुड बी इक्वल टू Q V2 B sin of theta. In second case the angle is theta which is unknown. तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। देखिए दोनों तरफ Q सेम है तो Q से Q कैंसिल हो गया आपके पास, और B से B कैंसिल हो गया। अब वैल्यूज पुट करें, यहाँ से बनेगा 1500
इनटू साइन थीटा वन व परपेंडिकुलर तो थीटा वन 90 डिग्री है, हम यहाँ पर लिखे साइन ऑफ 90 डिग्रीज इज इक्वल टू V2 हमें गिवन है विच 2000 मीटर पर सेकेंड। तो ये 2000 मीटर पर सेकेंड लिखने की जरूरत नहीं, दोनों तरफ सेम ये कट जाएगा। और साइन थीटा हमने थीटा फाइंड करना है, तो इसका बहुत आसान सा तरीका है कि आप इसको 2000 को इधर ले आए तो आपके पास ये बन जाएगा साइन थीटा बच जाएगा। साइन थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू, देखें ये साइन 90 जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। साइन थीटा इंटू 1 1500 इंटू 1 इज 1500 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाई 2000। मज़ीद सिंपलीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बेशक आप इसको ऐसे ही लिख लें, चाहे तो 15/20 लिख दें, आंसर सेम ही है क्योंकि आपने कैलकुलेटर से निकालना है। तो थीटा विल बी इक्वल टू वेयर, थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1500 ओवर 2000। तो ये हम कैलकुलेटर से निकालते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। On using calculator, the theta comes out to be 48.6 degrees, which can be rounded off to 49 degrees, and this is our answer। आपने एक आदत बना लेनी है कि जब भी कोई क्वेश्चन आप करेंगे उसको अपने बॉक्स में बंद करना है आंसर को, तो इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं और आपके पास ये आ जाएगा 49 डिग्री, एंड दैट्स योर आंसर। यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है। दैट्स इट, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेस्ट। तो इनिशियल वेलोसिटी, जब रेस्ट से हो तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 15 किलोवाट। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, V is given here in an oscilloscope। The electrons then pass through a 0.35 Tesla magnetic field that deflects them to the desired position on screen। Find the magnitude of the maximum force that an electron experience। ये भी वही क्वेश्चन है कि F is equal to Q V क्रॉस B। पहले हम इसकी V निकाल लेते हैं, देन वी विल मूव फर्दर। जी तो इसमें हम सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा हमारे पास है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें गिवन है, और वो गिवन कितनी है, मैस हमें गिवन है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास होती है 9.11 इंटू mass of electron is given is equal to 9.11 into 10 raised to the power minus 31 kilogram। This is the mass of electron। Similarly, potential difference given है, PD लिख लेता हूँ, आप जब पोटेंशियल डिफरेंस लिख लीजिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज V एंड दैट इज गिवन एज 15 इंटू 10 पावर किलो वोल्ट है, तो इसमें हम लिखेंगे 10 पावर 3 वोल्ट। ओके, दिस इज दी, you know that Q is potential difference equal to energy divided by
charge. Okay, so and that energy will be the energy provided by it will be transformed into the kinetic energy. Okay, and also the charge is of the electron is given as we know that as 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. Okay, and magnetic field strength is 0.35 Tesla. Magnetic field is given as 0.35 Tesla. And we have to find the force experienced by the electron. We have to find the force. Now this, how can we find this force? First of all, so this force is equal to QVB, because angle is here is 90 degrees, so sine 90 is equal to 1, so force will be equal to QVB. And the accelerated the potential it gets should be potential difference V is equal to energy or work done and divided by charge. So we write here that V is equal to half mv square divided by charge. Okay, from here we can get the v square as the velocity v square will be equal to q v into 2 divided by m, or you can write this implies that the velocity will be equal to under root of 2, we plug in the values, 2 into q is 1.6 into 10 raised to the power minus 19, and the potential difference is given as 15 kilovolts, so I write 15 into 10 power 3, this is the 15 kilovolt, the potential difference, divided by mass of electron, and that comes out to be 9.11 into 10 raised to the power minus 31. This is everything we know here. Okay, so we simplify it by the calculator, and the velocity comes out to be, so velocity with which it enters the magnetic field comes out to be 72587 431.67 meters per second. So this is the velocity. So therefore the force will be equal to
Q, V cross B. Q, we plug in the values. Q is 1.6 into 10 raised to the power minus 19, and V we just calculated as 7 to 5 8 7 4 3 1.67, and B is given as 0.15 Tesla. Just simplify it by the help of calculator. Sorry, this is given as 0.35 Tesla. This is 0.35. This is 0.35. So simplify it. When we simplify it with the help of calculator, the answer comes out to be 4.06. Answer comes out to be 4.06 into 10 raised to the power minus 12 Newton, which can be rounded off to 1 decimal point as 4.1 into 10 raised to the power minus 12 Newton. So that's the answer, and that's what we have to find. So answer comes out to be 0.4.1 into 10 raised to the power minus 12 Newton. That's it. Third question is, a square coil of side 15 centimeter each consists of 60 turns. Number of turns is 60. Initially, it is located in the uniform magnetic field of magnitude 0.8 Tesla. Okay, such that the plane of the coil is perpendicular to the field. The coil is then turned through an angle of 30 degrees in the time of 2 seconds. Determine the average induced EMF. So we have to find the average induced EMF. So let's solve it. First of all, we write the data. The given head side of the square is 15 centimeter. So length of the coil L is equal to 15 centimeter. To convert it into SI unit, that is meter, we divided by 100, so we get 0.15 meter. This is the length of the side of the coil. So this implies that area of the coil will be 0.15 multiplied by 0.15 because it's square, so area of square is side into side, so we multiply it and it comes out to be 0.225. I think 0.15 square comes out to be 0.0225. 0.0225 meter square. This is the area. Okay, also in question it is given that initially the plane is perpendicular, so plane perpendicular to mean normal is parallel to the magnetic field. Okay, and magnetic field is given as 0.8
8 Tesla. Okay, and number of turns also given. N is given as 60, and initial angle, initially it is parallel, so initial angle is 0 degrees. Okay, because when plane is perpendicular, then the angle is 0. Okay, so the initial flux will be equal to BA cos theta. BA cos theta. This is the initial flux, and final, also given final angle is 30 degree theta, so final angle is 30 degree. Therefore the final flux will be equal to phi final will be equal to BA, is theta I here, and the final flux is BA cos of theta F, the final angle. Okay, so we have to find the induced EMF, but the time is also given as 2 seconds. Delta T is the time duration. Delta T is given as 2 seconds. Okay, this is also given. So we have to find the induced EMF. We have to find the induced EMF. Let's solve it. Now we know that induced EMF is equal to N delta phi over delta T by the Faraday's law. So first of all we find the change in flux, that is delta phi, and that comes out to be BA final minus initial. The final flux is BA magnetic flux, BA cos theta F, minus initial was BA cos of theta I. So here we simplify it. So change in flux delta phi will be equal to, we take BA common, and inside the bracket we get cos of theta F minus cos of theta I. Plug in the values. So delta theta comes out to be delta phi, sorry, comes out to be delta phi change in flux will be equal to, B is 0.8, so we put 0.8, and A is also given. A is given as 0.0225 meter square, and cos of, and this is 30 degree minus cos of 0. So we calculated with the help of so delta phi comes out to be 0.8 multiplied by 0.0225
and cos 30 0.866, and cos 0 is 1, so minus 1. We use calculator. So we take the magnitude of the change in flux. So magnitude of the change in flux will be, we neglect the negative sign, and it comes out to be 0.00241. 2412. What is the unit? The unit of the flux is Weber. So change in flux is 0.002412 Weber. So we have to find the induced EMF. Induced EMF is equal to, therefore induced EMF is equal to, by the Faraday's law, N delta phi, the change in flux, divided by delta T. We plug in the values. N is 60 here, and delta phi comes out, just we calculated as 0.002412, and divided by T, the time is 2 seconds, so we put 2 here. So by calculator, it comes out to be 0.072, which can be volt, which can be rounded off to 0.07 volt. This is the induced EMF. We put it in the box. And that's the answer of the question. That's it. Let's solve the next question now. Metallic rod is moving through a uniform magnetic field of 0.2 Tesla. Given data is B is given as 0.2 Tesla. This is the magnetic field. Magnitude B is 0.2 Tesla. This is magnetic field, and the EMF induced across its ends is found to be 0.8 volt. So induced EMF comes out to be 0.8 volt. It is also given. So next is, it is required to induce an EMF of 2.4 volt across its end. How much field strength is required? Okay, now if we have to find, this is actually, we write that this is B1, this is epsilon EMF first case. So we have to find B2. What will be the magnetic field required if the induced EMF is to be 0.2 volt, सॉरी 2.24 वोल्ट. अगर हमने 2.4 वोल्ट इसमें EMF इंड्यूस करानी हो तो फिर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, जबकि आपके पास जो चेंज इन फ्लक्स है वो वही रहे और मैग्नेटिक फील्ड भी वही रहे. So the formula here we have to use is induced EMF is equal to V
L B. Okay, now V is and B are constant, therefore we can say that E is induced EMF is proportional to the magnetic field strength. Okay, so we can write that epsilon and EMF is equal to some constant into B, and V and L is constant. Therefore, if you put V1 here, it is E1 B1. Similarly, E2, the epsilon naught epsilon or the induced EMF in second case will be equal to K B2 because they are proportional to each other. Therefore, if we divide these two equation, we get EMF in first 1 over E2 is equal to K is cancelled with K, we get B1 over B2. Therefore, we have to find what? We have to find B2. So rearrange this to get B2 is equal to E2 into B1 over E2 in B1 over E1. Okay, just rearrange this equation. So plug in the values to find B2. So B2 will be equal to here in our question B1 was 0.2 and E2 is 2.4. So we put here 2.4 into B2, sorry, B1 is 0.2 and over epsilon 1 was 0.8, so we go to 0.8 for the EMF in this first case. Just use the calculator to get the answer. So we use calculator. हाँ जी, ये अब कैलकुलेटर सॉल्व करें तो आंसर आता है 0.6 टेस्ला और यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। इसको भी हम इस बॉक्स में बंद कर देते हैं, ये आप आदत बना लें। इट लुक्स गुड इन द एग्जाम। सो let's move forward to the next question. 10.5 question है, a copper ring has a radius of 4 centimeter and a resistance of 1 milliohm. Okay, we first of all we write data. The radius is given as given R is given as 0.4 centimeter. We convert it into meter divided by 100. So this will become 0.04. This is the radius. And we divide it by 100 to get 4 over 100 meter. Or you can write it like 0.04 meter. So this is the radius. Also resistance is given as 1 milliohm, 1.0 milliohm. Milliohm not a SI unit, so we convert it into SI unit to write 1 into 10 raised to the power minus 3 ohm. And next is a magnetic field is applied over the ring perpendicular to its plane. Okay, if the magnetic field increases from 0.2 Tesla to 0.4 Tesla, so change in magnetic field, the delta B is given here
delta B is given as 0.2, 0.4, so we get 0.4 Tesla minus 0.2 Tesla, and this comes out to be कितना बनेगा, ये बनेगा 0.2 टेस्ला। ये हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आ गया इन टाइम इंटरवल ऑफ 5 into 10 raised to the power minus 3 second. Okay, time interval delta t is also given. Delta t is given as 5 into 10 raised to the power minus 3 second. 5 into 10 raised to the power minus 3 second. This is the time interval. Question is, what is the current in the ring during this interval? We have to find I. We have to find I. Very easy question. Actually, we have to find the induced EMF, then we do the Ohm's law to find the current. Okay, first of all we find the induced EMF. So हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें फ्लक्स चाहिए, चेंज इन फ्लक्स, क्योंकि चेंज इन फ्लक्स होगा तो उससे फिर हमें इंड्यूस ईएमएफ मिलेगी। ईएमएफ से हम क्या निकालेंगे, ओम्स लॉ लगा के आई निकाल लेंगे। तो पहले आर गिवन है, इस आर से हम एरिया निकालते हैं। सो एरिया इज पाई आर स्क्वायर बिकॉज सर्कुलर रिंग, तो आर 0.04 है, तो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू पाई इंटू, keep pi as it is because you can use pi in the calculator as pi, and r is 0.04 square. By calculator we solve it and get area comes out to be 5.026 to be exact, 5.026 into 10 raised to the power minus 3 into 10 raised to the power minus 3 meter square. This is the area. Because initially the theta is 0, the plane is perpendicular, because then the normal will be parallel to B, so theta is equal to 0. Therefore delta phi, the change in magnetic flux, will be equal to B, delta B into A. Okay, delta, because B into A will give you the flux, but B into delta A will give you delta B A will give you the change in flux, and delta B is 0.2, so we'll write 0.2 Tesla into 5.026 into 10 raised to the power minus 3, and this comes out to be 5.026. I will write it 5 into, हाँ जी, तो इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, और ये आ जाएगा कितना, 0. सॉरी, एंड ये आ जाएगा 0.201, 0.201 volt. Now we have to find the current. Hence current will be equal to, by Ohm's law, the current can be calculated as, hence current is equal to, V is equal to IR, so I is equal to V over R. So this will be equal to 0.201
201 divided by R was given as 0.1.0 milliohm. So this will become 1.0 into 10 raised to the power minus 3. This is in volt and this is in ohm. So answer will be in ampere. So answer divided by 1 into 10 raised to the power minus 3. So it comes out to be 201.06. It comes out to be 201. Okay, but you can do not have calculator, just multiply with 1000, so we got 201 ampere. So this is the answer. The current induced will be equal to 2.201 ampere, and that's the answer of the question. That's it. Let's move on to the next question now. 10.6. So coil of 10 turns and 35 centimeters square area is perpendicular in a perpendicular magnetic field of 0.5 Tesla. The coil is pulled out of the field in 1 second. Find the induced EMF in the coil. Okay, very easy question. First of all, we write data given data. Given data is so solution of this question is the given data is N is the number of turns in the coil is 10 and area is also given. Area is 35 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा एरिया भी गिवन है, तो इसको हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर में. जब करेंगे तो ये बन जाएगा 35. ये ख्याल रखना है ये मीटर स्क्वायर है तो 10 पावर माइनस 2 से नहीं बल्कि 10 पावर माइनस 4 से मल्टी करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर आपने माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा. एंड थीटा इज 0 एंड इट इज फील्ड इज गिवन एज beta b is given as 0.5 Tesla. This is the magnetic field. Okay, and delta t is also given as 1 second. So first of all we find the flux. Change in flux is b delta a. Okay, so this is simple Faraday's law question, and first of all we find the change in flux. Change in flux is equal to b into a. B is and this will be equal to b is what? B is equal to 0.5 into a is 35 into 10 power minus 4 meter square. So this will be 17.5 into 10 power minus 4 Weber meter square. This is the change in flux. Therefore induced EMF will be equal to N delta phi over delta t. So n is 10 here, so we plug in the values.
10 into 17.5 into 10 power minus 4 divided by delta t. Delta t is 1 here, so the induced EMF comes out to be 17.5 multiplied by, this is ये 10 पावर माइनस 4 है, ये प्लस 1 है, तो बन जाएगा 10 पावर minus 3 volt, or you can write it 17.5 millivolt, or you can write it in the scientific notation, the move this here, this point. तो अब इसको एक डिजिट, जब हम इसको लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो पावर में एक प्लस करेंगे, तो यहाँ पर बनेगा 1.75 इंटू 10 पावर, प्लस करेंगे तो -3 + 1 क्या बन जाएगा, -2 वोल्ट, और यही आंसर बुक में गिवन है. सो आवर आंसर इज 1.75 इंटू 10 पावर -2 volt. That's it. That's the answer of the question. Let's move on to the next question. So last question is 10.10, because in some जो smart syllabus है उसमें 10.7, 10.8, 10.9, 10.11 and 10.12 जो है वो एक्सक्लूड कर दी गए हैं. सिर्फ 10.10 है, तो 10.10 है हमारे पास. The EMF of 0.5 volt is induced across the ends of a metal rod. So again, this is the induced EMF question, and induced EMF is here is induced EMF is given as 0.5 volt and across the ends of a metal rod moving through a magnetic field of the 0.4 Tesla. Magnetic field is also given, and magnetic field is 0.4 Tesla. 0.4, this is point, sorry, zero point 4 Tesla. This is the magnetic field magnitude, and question is, if an EMF it has to be induced, what field strength would be needed? If this is, we put it as 1 and 1, and second case is if we have to induce an EMF of 1.5 volt, what should be the strength of the magnetic field? We have already solved a question like that, so I'll use the formula directly here. I have derived that formula. You can, if you want, you can see there, and assume all other factors are constant. This implies that E1 over induced EMF 2 should be equal to B1 over B2, and we have to find B2. Okay, so from here we find that B2 is equal to E2, just cross multiply and make B the some formula of the subject of the formula, then we get this. Just वैल्यूज पुट करें इसमें, तो आपके पास B2 जो है वो आ जाएगा, B2 विल बी इक्वल टू 1.5 multiplied by B1. B1 is 0.4 Tesla over E1 is 0.5. This is volt, so answer will be in Tesla. Just use the calculator. हाँ जी,
कैलकुलेटर से हमारे पास जो आंसर आता है वो है 1.2 टेस्ला और यही आंसर बुक में भी गिवन है। सो द रिक्वायर्ड बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ शुड बी व्हाट, इट शुड बी 1.2 टेस्ला एंड दिस कंप्लीट्स चैप्टर नंबर 10 आल्सो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।